Welcome to chapter Applications of Derivative. We are here to discuss some extra question based upon this article. Now let us see here. Our questions are: find the point where y is equal to x plus 1 touches y square is equal to 4x. आपको दिया गया y is equal to x plus 1. आपको पॉइंट निकालना है जिसपे ये टच करे किस कर्व को, y square is equal to 4x. Okay, let the point be x1 y1. ओके, पॉइंट सपोज आपका x1 y1 है जहां पे ये लाइन आपके इस कर्व को टच कर रही है. फाइंड आउट द स्लोप ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये आपका हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 and your dy upon dx is equal to 4 upon 2y and that is equal to 2 upon y. Now find out this. Suppose this is m1. ये आप x1 y1 पे निकालिए और ये आपका कितना हो जाएगा 2 upon y1. Okay. Now slope of the line is already in the form of y is equal to mx plus c. Therefore slope of line is 1. You can see that line का जो slope है वो 1 है. So according to condition 2 upon y1 will be equal to 1 implies y1 is equal to 2. y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2. Now just see this line touches this curve at point x1 y1. तो ये point x1 y1 आपका इस लाइन पे भी लाई करेगा. point x1 y1 also lies on y is equal to x plus 1. तो आपके ये हो जाएगा y1 is equal to x1 plus 1. What is the value of y1? That is 2. 2 is equal to x1 plus 1 implies x1 is equal to 1. So at which point the given line touches the curve? Therefore point is equal to, your point is 1, 2. The value of x is 1 and the value of y is 2. Now let us move on to the question number 2. See, in question number 2 हमें प्रूफ करना है x upon a to the power n plus y upon b to the power n is equal to 2 touches the straight line x upon a plus y upon b is equal to 2 at point a and b for all n. Okay, now let us find out the slope. इसको आप डिफरेंशिएट करिए. ये आपका हो जाएगा n x upon a n minus 1. उसके बाद फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा? x अपॉन a का. तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन a. तो इस तरीके से आप इसको n अपॉन a लिख सकते हैं. इन द सेम वे ये आपका होगा n y अपॉन b n माइनस 1. जब y अपॉन b को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 1 अपॉन b मिलेगा. यहाँ पे b एंड दिस विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx. ओके, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, ये आपको 1 अपॉन b कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 0. 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी n अपॉन a x अपॉन a n माइनस 1 इज इक्वल टू, यू कैन डू वन थिंग, टेक दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड. तो आपको आ जाएगा n अपॉन b y अपॉन b n माइनस 1 dy upon dx is equal to minus n upon a x upon a to the power n minus 1. Now from here you can see that n and n will be cancelled. So your dy upon dx is equal to minus bn upon an x to the power n minus 1 and y to the power n minus 1. So this is what we are going to get slope. Now find out this slope at point A and B.
right? So this becomes minus bn upon an into a n minus 1 upon b n minus 1 and this is equal to minus b upon a. You can see here ये n माइनस वन जब आप नोमिनेटर में लोगे तो ये माइनस एन प्लस वन हो जाएगा और इसी तरीके से n माइनस वन जब डिनोमिनेटर में आएगा तो आपका सो यू हैव गॉट द पॉइंट. आपके पास ये पॉइंट है और आपके पास ये स्लोप है. ओके, नाउ दिस इज m. इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line at AB, this is equal to y minus b is equal to minus b upon a x minus a. ये आपका हो जाएगा ay minus ab is equal to minus bx plus ab, that is bx plus ay is equal to 2ab. Okay, just divide this equation throughout by AB. So you'll be getting here x upon a plus y upon b is equal to 2. So you can see, and this equation is not containing any term of n. So this is equation. You can see that this line touches the straight line for all value of n, as this equation is independent of n. Moreover, you can see that we are getting the same equation. So we can see that this given curve x upon a to the whole n plus y upon b to the power n is equal to 2 touches the straight line x upon a plus y upon b is equal to 2 at point AB for all n. Thank you.